now we are here to start with chapter 4 numericals. Okay. Of course, the subject science 1, and we're going to start with chapter 1, which is about current. Okay. So without wasting any time, we'll start with our sums. So that you get enough time to revise stuff. मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं न्यूमेरिकल्स करने वाला हूँ चैप्टर 4 के. अगर आपके टेक्स्ट बुक का रेफरेंस दूं तो पेज नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 12A. We are solving question 12A. Okay. Now this question says heat energy is being produced in a resistance in a circuit at the rate of 100 watt. So in this question, we are given that power is how much? 100 watt. How do I know कि वो power दिया हुआ? Because I know कि वहाँ पे watt दिया हुआ. Watt किसका यूनिट है? Power का. Current 3 ampere. We are given that current is 3 ampere. Is flowing in the circuit. What must be the value of resistance? हमसे R पूछा गया है. Okay. अब P, I और R तीनों को रिलेट होने वाला एक्चुअली कोई फॉर्मूला तो है. ठीक है. There is a list of formula in this chapter, जो यहाँ पे राइट साइड में दिखा देता हूँ मैं. इस चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूले हैं. So they go like this. We start with definition of current. I is equal to Q upon T. Therefore, Q is equal to I into T. ये एक फॉर्मूला है. Okay. Then Ohm's law से एक फॉर्मूला आता है, which is V equal to IR, जिसके और दो मीनिंग्स बनते हैं. एक क्या रहेगा, ऑफ कोर्स I equal to V by R, दूसरा क्या रहेगा, R equal to V by I. That again is slightly a part of common sense, right? उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन का, which is work done per unit charge, जिसमें से वर्क डन का फॉर्मूला आता है. And what is that? Potential difference into charge. लेकिन Q can also be equal to IT, है ना, यहाँ से. Therefore work done is also equal to V into I into T. वर्क डन का और एक फॉर्मूला क्या मिला, V into I into T. Now since we know कि work is similar to energy, ठीक है, जैसे W का फॉर्मूला V into I into T है, तो यहाँ पे जो एनर्जी क्रिएट होती है इन टर्म्स ऑफ हीट होती है. हीट का फॉर्मूला क्या हो गया, V into I into T. लेकिन V खुद क्या है, आयर है ना, फ्रॉम ओम्स लॉ, I into T. तो H का और एक फॉर्मूला क्या मिला, I square RT. हीट का और एक फॉर्मूला क्या मिला, I square RT. ठीक है. उसके बाद आता है पावर का डेफिनेशन. पावर इज डिफाइंड एज व्हाट, वर्क डन पर यूनिट टाइम. वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, V into I into T अपॉन T. क्या, तो TT कट. क्या बचा, पावर. पावर इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट. पावर इज इक्वल टू V into I. लेकिन एक कॉन्सेप्ट है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, उस बारे में आपको बता दो. यहाँ पे मैं, हमको पता है कि पावर वर्क डन पर टाइम है, तो वर्क डन क्या होगा, पावर इनटू टाइम. वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, तो एनर्जी क्या होगा, पावर इनटू टाइम. अब पावर का यूनिट होता है वैट और टाइम का होता है सेकंड. तो हमको लगेगा कि एनर्जी का आइडियल यूनिट क्या होना चाहिए, वैट सेकंड. लेकिन ऐसा होता नहीं है. कमर्शियली हम लोग जब लिखते हैं तो वैट को लेना चाहिए हमेशा किलोवाट के फॉर्म में, और टाइम को लेना चाहिए हमेशा आवर्स के फॉर्म में. तो जहां जहां कमर्शियल यूनिट एक्सप्रेस होगा वहां पे आपका यूनिट क्या रहने वाला है, किलोवाट आवर. सो यू हैव टू टेक केयर कि आप उसको टाइम पे कन्वर्ट करो किलोवाट आवर्स में. ठीक है.
अभी सब फॉर्मूला बताने के बाद मैं बैक टू सम आता हूँ. सो आई हैव फॉर्मूला पावर का P इज इक्वल टू V इंटू आई. अब यहाँ के मैं कहाँ अटक गया, R चाहिए और V दिया हुआ. What I'll say, what is V? I to R. So power is I into I, which means power is what? I square R. Which means power upon I square will be what? R. मेरा काम यहाँ पे खत्म हो गया. क्यों? अब खाली कैलकुलेशन बचा है. So अगर R is power upon I square, what is power given as 100? What is I given as 3? 3 का square क्या होगा? 9. 100 upon 9. Now 9 ones are 9. 1 0. 9 ones are 9 again. 0.10. 9.11. इसको अप्रोक्सीमेटली क्या कर दिया आंसर में? 11 ohms कर दिया. ठीक है. So that is question number 12A, and these are the list of formula that you might require for solving. Okay. Now I think I'll go for, see, since it's a video, जैसे ही आपको लगे solution समझ में आ गया, खत्म हो गया, आप उसको pause करके screenshot ले सकते हो ताकि writing time आपका बचे. मैं next question पे जाता हूँ, which is 12B. Let us see question 12B क्या बोलता है. It says that two tungsten bulbs of wattage 160 power work on 220 if they are connected in parallel. अब यहाँ पे पैरेलल सर्किट है. पोटेंशियल डिफरेंस है. यहाँ पे पहला बल्ब है, यहाँ पे दूसरा बल्ब है. इस तरह से वो सर्किट है. ठीक है. दिस इज बल्ब 1, दिस इज बल्ब 2. ठीक है. और ये प्लस माइनस कितना है, ये है 220 वोल्ट, ऐसा क्वेश्चन में दिया है. ठीक है. हमसे पूछा पैरेलल में लगाया तो कितना करंट निकलेगा, यहाँ से कितना करंट आएगा. लेटेस्ट से यहाँ से आय आता है तो हमसे आय पूछा है. ठीक है. लेकिन आय के बारे में एक बात क्या है, अब ध्यान से देखो, तो वो यहाँ से आएगा, यहाँ टर्न मारेगा, यहाँ जाएगा. जब वो यहाँ पहुंचेगा, इस जंक्शन पे पहुंचने का, तो ब्रेक होने वाला है इसमें और इसमें. इट इज गोइंग टू ब्रेक इन टू सर्किट्स. वन विल गो इन दिस डायरेक्शन, अदर विल गो इन दिस डायरेक्शन. तो हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे इस वाले को I1 और इस वाले को बोल देंगे I2. So can I say that I will be what? I1 plus I2. Yes, I can of course say that. Now what do I know about power? Power is V into I. Therefore, what will be I? Power upon potential difference. तो सेम फॉर्मूला यूज करूंगा. I1 क्या बन जाएगा यहाँ पे? P1 upon V. और I2 क्या बन जाएगा यहाँ पे? P2 upon V. What is P1? 100 upon V 220. What is P2? 60 upon V 220. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आई कैन ऐड 100 plus 60 upon what? 220. So that is 160 upon 220. 0 0. But क्या बचा? 16 upon 20. 2 8s and 2 11s. So I is 8 upon 11, which is approximately equal to 0.72 amperes. And that is our answer. तो ये बहुत इजी था 12B. अब 12C देख लेते हैं. Who will spend more electric energy? 500 watt TV set in 30 minutes और 600 watt. तो यहाँ पे दो हमको situations दिए हैं. ठीक है. एक दिया है टीवी का और एक दिया है हीटर का. ठीक है. टीवी का जो पावर है that is 500 watt. So power 1 is 500 watt. और हीटर का जो पावर है 600. So power 2 is 600 watt. टाइम जो है टीवी का वो 30 मिनट्स है. So T1 is 30 minutes. और उसका जो यूनिट है वो टाइम है वो 20 मिनट्स. So T2 is 20 minutes. ठीक है.
What I'll do is convert time into hours. So my new time T1 will be 30 upon 60, that is 1 upon 2, that is 0.5 hours. और इसको भी अगर मैंने कन्वर्ट किया तो बाय 60 करूंगा मैं. 20 upon 60 is 1 upon 3, which is equal to 0.33 hours. Okay, अभी से मैंने क्यों किया? Because मुझे कंपेयर करना है दोनों को. I'm supposed to compare them. Okay, and to compare I must have some values on board. Now, who will spend more energy? Now, I know the formula of energy. Since power is work done upon time, so work done becomes what? Power multiplied by time. ठीक है, और यही एनर्जी का फॉर्मूला है. so, यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? इट इज पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम. एनर्जी 1 will be P1 multiplied by T1 and energy 2 will be P2 multiplied by T2. What is P1? अच्छा, इनको भी कन्वर्ट कर लेते हैं ना. ये हो जाएगा 0.5 किलोवाट और ये हो जाएगा 0.6 किलोवाट. okay, so 0.5 kilowatt into 0.5 hours is 0.25 kilowatt hour. ये आपका एनर्जी कंज्यूम बाय फर्स्ट मशीन. एनर्जी ऑफ सेकेंड मशीन विल बी 0.6 multiplied by 0.33. That is exactly 6 upon 10 into 1 upon 3. So that is 6 upon 30. That is 1 upon 5. So energy of second machine is 0.2 kilowatt hour. ये एनर्जी 1 है और वो एनर्जी 2. इससे क्या पता चलता है कौन ज्यादा कंज्यूम कर रहा है? फॉर 0.25. सो टीवी सेट इज कंज्यूमिंग मोर. इफ यू सी, ये वाली एनर्जी जो है वो ज्यादा है. So you say that TV set is consuming more energy. Okay. Once again, if you want, you can take the screenshot of the screen so that you have the answer. So that I can proceed for the next question, that is 12D, which is also the last question of this section. Okay. So we are here looking at question 12D. Electric iron of 100 watt. So it is given that power is how much? 1100 watt, which is also good as 1.1 kilowatt. Is operated for 2 hours daily. What is the time? It is 2 hours. लेकिन ये कैसा है? ये डेली है. हर रोज 2 घंटा यूज होता है. So 2 hours daily. पूछा क्या? एक्सपेंस कितना आएगा अगर रेट है 5 रुपीज. सो मुझसे पूछा गया है कि एक्सपेंस कौन से महीने का? अप्रैल मंथ का टोटल एक्सपेंस कितना आएगा? दैट इज द क्वेश्चन. और रेट क्या है? रेट है 5 रुपीज पर यूनिट. तो मेरा काम बनता है कि सबसे पहले मैं ये फाइंड कर लूं कि कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए. सो सिंस पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम एंड देयरफॉर वर्क डन is power into time and work done is as good as energy. तो एनर्जी भी क्या हो गया? पावर इनटू टाइम. अब पावर कितना है? 1.1 किलोवाट. टाइम कितना है? 2 आवर्स. लेकिन ये क्या हुआ? ये डेली का हुआ. मुझे क्या चाहिए? अप्रैल मंथ के लिए चाहिए. तो 1.1 into 2, ये जो डेली का है, मल्टीप्लाइड बाय 30. व्हाई? बिकॉज अप्रैल मंथ में 30 डेज होते हैं. सो इट इज 1.1 into 60, which is basically 66 kilowatt hour. इतना एनर्जी कंज्यूम हुआ है. एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ है? 66 किलोवाट आवर. अब बिल जो है वो कैसे बनता है? रेट मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी. रेट है 5, एनर्जी है 66, सो आंसर आएगा 330. सो जो बिल है या फिर जो एक्सपेंस है, इट इज हाउ मच? 330 रुपीस. ठीक है, दैट्स द आंसर. इस तरह से चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल सारे खत्म हुए. विश यू ऑल द बेस्ट. विल मीट सून फॉर हीट न्यूमेरिकल्स.